Hi everyone, so here is another topic from Why Do We Fall Ill, and the topic is influenza. Influenza is a common viral infection and that can be deadly, especially in high risk groups. So, it's a kind of flu, it's a viral disease, and as you know, viral diseases are highly contagious disease. So, influenza is a contagious disease. During influenza, fever, viral infection, main problem is respiratory problems like lungs problem, severe ache, muscular pains. These are the main problem during influenza, and influenza is spread easily. Mainly flu attacks the lungs, nose, throat. So young children's, older adults, pregnant women, and people with chronic disease or weak immune systems are at high risk of this disease. So here you can see this disease is three type: influenza A, B, C. So influenza virus A and B have caused epidemics throughout the world, but influenza virus C occurs sporadically in the form of small outbreaks. So C is not as dangerous as A and B. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स आप इजीली बता सकते हैं. इन्फ्लुएंजा हमारे रेस्पिरेटरी से ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज है, तो इसमें हमें जो है ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी. एज वेल एज फीवर इज द कॉमन सिम्टम इन few diseases: chills, aches, pain, coughing, weakness. These are the symptoms. What are the prevention? As you know, it is highly contagious disease, so it is spread by a respiratory droplet, by touching, by saliva, by skin to skin contacts. So what you have to do, how you can prevent: you have to cover your face, you have to make distance from sufferers, use handkerchief always when you cough, when you sneeze. Healthy person should remain away from such patients, those having influenza. Now, what are the treatments for influenza? Mainly what you have to do, you have to take rest as well as fluid intake. You have to increase your fluid intake to allow the body to fight with the infection on its own. नाउ पैरासीटामोल दैट यू कैन टेक. पैरासीटामोल आपको हेल्प करेगी कुछ सिम्टम्स को क्योर करने में. जैसे आपको फीवर है, आपको एक्स है, पेन है, उसको कम करने में पैरासीटामोल जो है दैट विल हेल्प. अदरवाइज फॉर सेल्फ केयर यू हैव टू टेक बेड रेस्ट एज वेल एज increase the fluid intake. Now, this flu generally takes time to develop inside the human body. It is not noticeable until 2 to 3 days. This is the incubation period. हर disease के अंदर एक incubation period होता है. Incubation period का मतलब है कि एक disease अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, एंटर करने के बाद हमारी बॉडी कितने टाइम के बाद सिम्टम्स शो करती है कि हमें ये डिजीज हुई है. सो अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा अभी और वो सिम्टम्स आएंगे 5 डेज के बाद, सो दैट 5 डे पीरियड इज द इंक्यूबेशन पीरियड. सो इन इन्फ्लुएंजा इट इज नोटिसेबल अंटिल 2 to 3 days. And the name of this virus is orthomyxoridea, is a family, okay, जिससे इन्फ्लुएंजा होता है, and it is a RNA virus, राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस. वायरसेस में डीएनए एंड आरएनए दोनों हो सकते हैं. सम आर हैविंग आरएनए वायरसेस, सम हैविंग डीएनए वायरसेस. Now the next disease is rabies. Rabies जो disease है, as you can see here, there is a picture of dog. तो ये disease dog से spread होती है. Okay, dog bite करने से ये disease spread होती है, and this is also viral disease, and it leads to encephalomyelitis. Now the question is, what is encephalomyelitis? It is inflammation of the brain due to infection. वायरल और कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अंदर भी encephalomyelitis हो जाता है, पर generally when rabid dog bite a healthy person and virus enter into the blood and reach to the brain, it leads to encephalomyelitis. And this virus transmit with the help of saliva. Generally dog की saliva के अंदर वो virus होता है और वो blood में enter
करेगा. एंड द फैमिली ऑफ दिस वायरस इज रेप्टोविरिडिया. रेप्टोविरिडिया. अब जो रेबीज है, ह्यूमन केसेस 99% ह्यूमन केसेस आते हैं डॉग बाइट करने की वजह से. एंड 1 डेथ एवरी 9 minutes वर्ल्ड वाइड. 4 out of 10 डेथ आर इन चिल्ड्रंस, बिकॉज चिल्ड्रंस जनरली ऐसा देखा गया है कि चिल्ड्रंस को ज़्यादा डॉग्स बाइट करते हैं. 100% वैक्सीन प्रिवेंटेबल. अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो इट इज़ कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल. नो बाइट नो रेबीज. तो आपको क्या करना चाहिए, डॉग को हमेशा रेबीज की वायरस लगवा देनी चाहिए, जिससे अगर वो किसी को बाइट भी करेगा तो वायरस ट्रांसफर नहीं होगा. वैक्सीनेट. और अगर आपको डॉग बाइट करता है तो उसके बाद आपको वैक्सीनेट कराना चाहिए अपने आप को टू सेव योर लाइफ. एंड vaccinate to stop transmission. So, and as well as learn how to interact with dog. According to WHO, 99% human cases result from dog bites, and 28 September is the World Rabies Day. Now the question is, how rabid virus transmitted in human beings? So what happened in this case? The bite of rabid dog को हम mad dog भी बोलते हैं just because of this virus. So जो rabid mammals हैं जैसे कि monkeys, cats, rabbits and dogs, they can cause rabies, and which is very fatal, dangerous disease, viral disease. And how it transfer? It transfer with the help of saliva present in the infected animal. Like here you can see this is the rabid dog, and if this rabid dog bite this human being, so rabies virus is present in the saliva, so it will transfer from dog to human being. Okay, now this virus enter into blood and it replicate, it make lot of copies and infect the nervous system. And after this it transfer to the spinal cord. You can see here this is our spinal cord, and after that finally infect the brain, and the virus are injected into human blood by bite of the rabid animal. एंड वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रेबीज डिजीज़ है उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 to 3 month. ठीक है, अप टू 3 month. बिकॉज जैसे ही रेबिड एनिमल ने बाइट किया इंस्टेंटली आपको सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे. आफ्टर सम टाइम मीन्स 1 to 3 month तक वो रेप्लिकेट करेगा. कभी कभी होता है कि 1 week के बाद ही सिम्टम्स दिखाई दे जाते हैं जनरली, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आफ्टर अ ईयर ऑल्सो, मीन्स कुछ बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है रेबीज़ वायरस को ग्रो करने में. बट एक बार अगर रेबीज़ वायरस ग्रो हो जाता है तो 101% person will die. So now you can see how this virus is transferred to rabid animal to brain, and how it infect our body. So first step, virus enter by animal bite, virus present in the saliva. Second, enter into the body, blood. Third, infect our peripheral nervous system. Then finally dorsal root ganglion. Here you can see this part is the dorsal root ganglion and this one is peripheral nervous system. And finally reach to the brain and infect our brain. And virus travel from brain से फिर जितनी भी नर्व्स निकलती हैं और वो जितने भी टिश्यूज और जितने भी ऑर्गन्स के पास हमारे जाती हैं उन सब के अंदर ये इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, और ईच एंड एवरी पार्ट इन्फेक्टेड बाय दिस वायरस. So this is the pathway of virus, how it transmitted from a rabid animal to a healthy person. And the name of that virus is the Lysa virus. Lysa virus. Lysa means rage. Here meaning of rage is violent वायरस. बिकॉज अगर एक बार बॉडी के अंदर ये ट्रांसफ़र हो गया एंड अगर बॉडी के अंदर ये स्प्रेड हो जाता है तो इट इज़ नॉट प्रिवेंटेबल, इट इज़ नॉट क्योरेबल. हम इसको ना रोक सकते हैं, ना ही कोई वैक्सीन है. सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें जितने भी एनिमल्स हैं, रेबिड एनिमल्स मेनली, उनको रेबीज़ वायरस लगवाना, रेबीज़ वैक्सीन लगवानी चाहिए. एंड अगर कोई डॉग बाइट करता है तो उसी टाइम पे क्लीन द वाउंड
first and go to the doctor and take a vaccine. So here are some control and preventions of rabies. These are the symptoms of rabies. सिम्टम्स में क्या होगा? इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी उस पर्सन को, हाई फीवर होगा, पर्सन हैविंग हेडेक, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन इन मसल मेनली इन थ्रोट एरिया, पर्सन इज नॉट एबल टू च्यू एनीथिंग, इंगल्फ एनीथिंग, cramps in body, okay, and salivation, excessively salivation, and cerebral edema, जो हमारा ब्रेन है वो स्वेलिंग कर जाएगा, क्योंकि ये ब्रेन में ही इन्फेक्शन कॉज करेगा और उससे हमारी पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाता है. सो दीज आर द मेन सिम्टम्स. और यहाँ पे एक वर्ड आता है हाइड्रोफोबिया. हाइड्रोफोबिया इज मेनली रिलेटेड टू दिस डिजीज, एंड इन हाइड्रोफोबिया व्हाट हैपेंड, पेशेंट्स डेवलप fear of water, that is known as hydrophobia. Hydro means water, phobia means fear. So fear of water. Now what are the control and preventions of rabies? So prevention is better than cure. Rabies is an infectious disease, आपको पता है, that is preventable. क्योंकि क्योर नहीं है, फिर इसका प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना है? जितने भी रेबिड एनिमल हैं, गेट रेबीज वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, वैक्सीनेटिंग योर पेट अगेंस्ट द डिजीज. जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना. अगर कहीं पे भी कोई वाउंड हो भी जाता है, अगर वो कोई एनिमल बाइट करेगा तो हमें क्या करना है? इंस्टेंटली वी हैव टू वॉश दैट एरिया विद द सोप एंड गो टू द डॉक्टर इमीडिएटली. कीप योर पेट्स अवे फ्रॉम द अदर स्ट्रे डॉग्स, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स में भी रेबिड हो सकते हैं. तो अगर आपका कोई पेट है तो वो उनकी वजह से रेबिड ना हो, क्योंकि ये जितना भी बॉडी फ्लूइड है, बॉडी लिक्विड है, उससे ट्रांसफ़र हो सकता है. और अगर आपकी बॉडी पे कोई वाउंड है और या फिर एनिमल की बॉडी पे वाउंड है तो वो वहाँ से भी ट्रांसफ़र हो सकता है. एंड हियर इन कंट्रोल वी कैन डू वन मोर थिंग, दैट इज Pasteur's treatment. This Pasteur treatment is famous for rabies disease, and that is discovered by Louis Pasteur. That's why it is known as Pasteur's treatment, which goes in the 14 vaccine, 5 anti-rabies vaccine prescribed by interval of 0, 3, 7, 14 days, 30 days, day of dog bite. So this is all about the Pasteur treatment. Thank you so much.